गौरवान्वित हैं श्रीमान. We are also honored to have on the dais Lieutenant General Upendra Bedi, Northern Army Commander, Dr. Samir Kamath, Secretary DoD and Chairman DRDO, as well as distinguished dignitaries from IIT Jammu and SIDM. Ladies and gentlemen, it's time for the felicitation ceremony. May I request Sri S.P. Shukla, President SIDM, to felicitate our Chief Guest, the Honorable Raksha Mantri Ji. अंगवस्त्र प्रतीक भाव की हमारी शाश्वत परंपराओं का श्री J.D. पाटिल, भूतपूर्व प्रेसिडेंट SIDM, से निवेदन की वो हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को अंगवस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित करें. IIT के बच्चे भी इसमें भाग लेते हुए श्रीमान. Can I request Mr. Kamath also to join on the stage if he's amidst us? महोदय, याद आता है 19 नवंबर 2021 का वो दिन. अवसर था रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती पर झांसी में आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का. माननीय प्रधानमंत्री जी का गौरवशाली सानिध्य, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई सम्मानित विभूतियों की उपस्थिति, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी के उद्घोष के बीच माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा था, वो दिन जल्द आएगा जब 100% रक्षा जरूरतों का सामान मेड इन इंडिया होगा. एक और संकल्प दोहराते हुए आपने ये भी कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2024-25 तक रुपए के रक्षा निर्यात का जो लक्ष्य रखा है, हम उस लक्ष्य को पूरा करके रहेंगे. और देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 में हमारा रक्षा निर्यात अब तक के सबसे उच्चतम स्तर को छूते हुए 16,000 करोड़ का गगनचुंबी आंकड़ा पार कर चुका है. और ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि संकल्प से सिद्धि की ऐसी गौरव गाथा है जो प्रखर शीर्ष नेतृत्व की प्रेरणा, प्रतिबद्धता के साथ साथ करोड़ों देशवासियों के पुरुषार्थ एवं राष्ट्र प्रेम की पराकाष्ठा को बयां करती है. रक्षा मंत्रालय, SIDM, उद्योग जगत, एकेडमिया एवं भारतीय सेनाओं के अद्भुत समन्वय तथा सामर्थ्य को भी उत्तरी कमान SIDM एवं IIT जम्मू द्वारा आयोजित नॉर्थ टेक सिंपोजियम एक ऐसा महाप्रयाण जो इन उपलब्धियों को और बुलंद करेगा ताकि मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड तथा लोकल फॉर ग्लोबल का सपना पूर्ण रूप से साकार हो सके. समय है स्वागत संबोधन का. May I request Sri S.P. Shukla, President SIDM, for the opening address, please. Sir, I'll request you to come onto this podium. You can give that mic on this podium. Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh ji, Shri Mojo Singh, IIT, हमारे host and our facilitator, Lieutenant General, General Officer Commanding
Northern Command. Sir, we are thankful to you for all the facilitation. Padma Bhushan Dr. Pillai, he is here, the chairman of SIDM jury committee. We also have our immediate past president, Mr. Jain Patil, Mr. Sunil Mishra, members of SIDM award jury, officers of our armed forces here, Indian Army, teaching faculty and students of IIT Jammu, members of the industry, and all our friends from media and press. A very good afternoon to you. I'm so happy to be here. I cannot express academia. Defense industry came together both to dialogue, to discuss and exchange ideas, but also to showcase what has been achieved. I welcome you all at Symposium 2023. This is the sixth time it is happening, but first time in Jammu Kashmir. When we decided on Jammu, there were several thoughts behind this. First and foremost, who needs defense equipment more than Jammu Kashmir? Our user is here. Number two, what better way to motivate faculty and students of IIT Jammu to participate actively in developing and nurturing defense technologies? And third, and equally important, showcase to members of Indian industry what great strides we have made in this union territory in last few years. And atmosphere is conducive to business and industry. We were fortunate that Honorable Raksha Mantri ji kindly consented to be the chief guest. Sir, we are grateful. मैंने कई बार पहले कहा है और आज फिर कहता हूं, in last few years, the face of our industry has changed. रक्षा मंत्री जी आते हैं तो उत्साह बढ़ जाता है. This is something I have always said, that now that all policy changes, policies, improvements in the Ministry of Defense have been implemented under his guidance, under his direction, now the burden has shifted to the industry, to academia, and the users to come together and expedite the process of building a strong defense ecosystem in the country. I would also like to gratefully thank Minister of State, Dr. Jiten Singh, for Science and Technology. Sir, we are grateful to you. There will be no defense technology without science and technology. We hope to hear from you more about National Research Foundation. I am sure there will be many dual technology initiatives in the National Research Foundation from which defense sector will also benefit. I would also like to thank Director IIT Jammu, sir, your gracious support to make this happen. We are grateful to you. I would now like to spend few minutes on what has been done since yesterday, the purpose and objective of this symposium. During several sessions held since yesterday, we have had deliberations on many topics. For example, military R&D, innovation, breakthrough technologies. We had focus on innovation trajectories of different initiatives as well as infrastructure. We discussed
need for strategic planning so that industry can plan ahead, and the need for cooperation in different verticals which come together to create an ecosystem. We discussed management of entire refurbishment effort, which can give longer life to older equipment. And last but not the least, military civil integration for entire modernization effort. I'm proud to say that SIDM, which is your asset, which is your national asset in defense, has grown from 10 founding members 6 years ago to 525 members today. I think that deserves a big hand. And this has happened during the tenure of Honorable Raksha Mantri ji. The encouragement and support we have received has made it possible. In today's exhibition, more than 150 participants are there. That shows depth of our industry today. We are not talking about handful of large companies. We are talking here about more than 150 startups, small and medium companies, as well as large companies who have put up this show. And I would like to thank them for their wholehearted participation. There is also military equipment on display put up by the armed forces, which gives the exhibitors first-hand experience of what kind of equipment army is using. Our industry has been changing military capabilities and technologies from foreign OEMs. It has been going on for a very long time. Sometimes people say, how does it matter? Equipment made in India or bought from outside? I would like to give you a very simple and small example. If every time before a music show you had to borrow your guitar, you had to take on loan a musical instrument, will you be as good a musician? No. We have to win wars with our own equipment, which can be supported in India. And at time of emergency, nobody says, I will not give you spare parts. I have said this perhaps earlier once, and I have our friends from the armed forces, I would like to say, कि ठिकाना दुश्मन का, अस्त्र और शस्त्र हमारे देश के, और निशाना आपका. Our government has been instituting a policy framework to achieve self-reliance in defense, both to build indigenous capability and capacity, not only to stay contemporary, but also to stay ahead on cutting-edge technologies. The ongoing conflicts elsewhere in the world have given us ideas about what can happen. Old traditional technologies can be challenged. We have seen current war in Europe showing how drones, something which was untested technology before, can stand up against and create havoc against larger equipment of adversary. Therefore, it is becoming critical that we stay on the cutting edge of technology and don't try to play catch up all the time. Indigenous development of such capabilities in line with global developments is the mission, is the objective. SIDM has been created. We are happy and proud for having partnered both IIT Jammu and Northern Command Indian Army for putting this exhibition and symposium together. Please enjoy the discussions in the symposium. Go through the stalls and see the capability which Indian defense sector is creating and feel proud of it. With that, I will close my opening remarks, thanking once again Honorable Raksha Mantri. Sir, thank you for your kind presence. Dr. Jitendra Singh, sir, thank you for your kind presence. And our Chief
surprise guest today, Dr. Kamath, who has been an inspiring presence both within DRDO as well as to the industry outside, who have seen initial efforts by DRDO to create a defense ecosystem. Sir, we hope you would like what industry has achieved in its own way, and we will look forward to receiving from you further inputs. Thank you so much. Jai Hind. धन्यवाद श्रीमान। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, वो शरणदायिनी धरती मां जो करती सबका मान है, हे मातृभूमि संतान हम, जननी है तू शान है। जन्म जम्मू क्षेत्र की इसी पावन धरती पर जन्मे, पले और इसके कण कण से जुड़े हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री की उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं। आपसे आग्रह, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें श्रीमान। ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी और हम सबके प्रिय नेता परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, सेक्रेटरी डीआरडीओ मिस्टर कामत, डायरेक्टर आईआईटी प्रोफेसर गौड़, प्रेसिडेंट SIDM Mr. Shukla, dignitaries on the dais, our friends from the Defense Forces, members of the IIT faculty, ladies and gentlemen. At the outset, I have to compliment the organizers for having held this event at a very auspicious timing. We've just about 48 hours back successfully concluded the G20 Leader Summit, which was also in a way an opportunity for India to showcase its technological capabilities along with its economic strength. And that is precisely also one of the objectives of this exhibition over here in this program. And just a few days after the successful landing of Chandrayaan on the surface of Moon, which could reiterate to the world that now is the time when India is ready to lead the rest of the countries. And as students of science, we have been taught not to speak without evidence. And the evidence is that even though America had landed a human being on the surface of Moon way back in 1969 in the form of Neil Armstrong, who had a stroll around, BBC captured it, but he could see the presence of water on the surface of Moon. It was our Chandrayaan who picked up the evidence of water molecules and startled the entire world. I also have to thank you for making me a part of this event. I'm sure I shall go back wiser than before this evening, and this will also provide me an opportunity to share with you some of the particularly defense-related cutting-edge technologies that we have been working on in the science fraternity across the country. And my special word of appreciation for Professor Gord for very wisely having chosen this venue. It's been my considered view for quite some time that this is perhaps the best of the times happening for India, A, for the youth, and B, for the technology advancement. And IIT, incidentally, happens to be dealing with both. You are, on the one hand, a huge resource pool of youth, and on the other hand, you are believed to be a hub of technology. And ladies and gentlemen, when I say this with the conviction that India never had a dearth of potential. We have a natural scientific temper amongst us. We had the potential. We had the capabilities. We had the commitment. We had the dream in our eyes. We had the capacity to put in hard work. Just recall the pictures of Vikram Sarabhai carrying a launcher on the carrier of his bicycle, devoid of resources.
So we had a huge human resource, but what we were lacking was possibly an enabling milieu, which happened after 2014 when this government came in under Prime Minister Narendra Modi. Our budget in all these science departments has gone up by almost 100%. We have a huge industry participation now. And we have also broken many taboos of the past. And when I was talking about Chandrayaan, I think that is one of the best examples. Till a few years ago, you could not even peep inside the gate of Sriharikota. When I went there for the first time in 2014 for the launching of a PSLV, the chairman was my friend, Dr. Radhakrishnan. In the middle of the night, he said, Doc, I'll take you to a place where even my fraternity is prohibited. So in the middle of the night, he took me close to the launching site. And I told him, I said, Radha, I've made a principle for myself to learn one new thing every day. What I learned today is that to reach this place, either you should be as eminent a scientist as you are, or sometimes manage to enter into politics and reach here. But why these barriers? And thankfully, under Prime Minister Modi, this government took a courageous decision. The gates of Sriharikota were thrown open. And you would be surprised when I tell you that even when we had the Aditya launching just a few days back, we had as many as 10,000 spectators there at the launching site, watching the mission, watching the launch with their naked eye. And on the launching of the Chandrayaan days, we had as many as more than 1,000 media persons. One of the media persons came to me and said, one of the critics says, what is the difference? This used to happen earlier also. I asked him, have you come here earlier? He said, no. I said, that is the difference. You were forbidden from even peeping in. Now you can loiter around. And rightly so, when the Google is watching you, even what is happening inside your living room, there was no point. We had restrained ourselves by self-imposed barriers, functioning behind a veil of secrecy, restricting our resources. We have opened up now to the private participation. Today, within a span of 3 years, in space sector alone, we have jumped from 4 startups, just 4 to 150. And one of the earlier ones like Skyroutes have turned flourishing entrepreneurs. Our space economy, we are just 2% now, but our projection is that we will soon be from 8 billion going to 40 billion. And that's my projection about myself. But some of the ADL report says that we might jump up to 40, not 40, but 100 billion because so fast we have started moving on. And all this has happened in the last 8-9 years without being modest. I have the evidence to say that. If you take startups as a whole, we were just about 350 in 2014. Today we are more than 1 lakh. We are more than 110 unicorns. If you take the biotech sector, we were just 50 startups in 2014. Today we are more than 6,000. Our bioeconomy in 2014 was just about 10 billion US dollars. Today it is 18 million, nearly 8 times more, and we hope to be 150 billion. So what I'm trying to say is that from a nation which took its leads from others, we have moved on to be a nation which is ready to give leads to others. And today, the world looks up to us. The world is ready to be led by us because it's entirely technology-driven growth. From here onwards, any country, any nation that aspires to grow has to grow on the basis of its technological capabilities. And therefore, the world is ready to be led to us. It is now up to us to decide whether we have the capacity to lead the world. And not only we have moved at an equal pace, we are now equally placed. And as I said, I will not talk without evidence because I believe I am speaking to an audience of scientific background. Just recall, television arrived here 2 decades later. It was there in USA in 1950. The famous 1960 debate in which John Kennedy turned the tables on Richard Nixon happened because of a debate. And we in India did not know what is a debate and what is television. It came here only in 1970, that too in the form of a Chitrahar. Similarly, computer came here 15 years later. Today, and just see today, we are one of the 4 or 5 nations who are into quantum technology. We are not behind anybody. And in space vector, we are ahead of others. We are the first one to land on the South Pole. And the inputs and inferences which are being obtained by us are being awaited with keenness by agencies like NASA, who started off much before us.
They were preparing to land on the surface of moon, and we were singing nursery rhymes like Chanda Mama Dur Ke. So we are today either along with them at the same pace and also perhaps ahead of them. Secondly, we have also given to the world, as far as the R&D is concerned, Professor God is there, two new role models, one of cost-effective missions and cost-effective scientific projects, and B, of sectoral application to bring ease of life for a common citizen. When I said we'll talk with evidence, our Chandrayaan cost 600 crore. The failed Russian mission cost 16,000 crore. Because, as I said, we used to make up for our human resource through financial constraint. We made use of the gravitational forces. We took about 20 rounds around the Earth, went to the lunar orbit there, but we were cost effective and we were more successful. We didn't move like a bullet train, saving on fuel. So we have given the world, the entire world, wherever I go, because I've somehow by default got identified with Chandrayaan. Everybody keeps asking me, how did you make it in 600 crore? And Aditya, just 380 crore. The world is taken aback. We have given them a model of cost effective because our socio-economic upbringing was like that. I said it's just like I purchased a new car out of loan, which I precisely did in my own lifetime when I purchased a new car. I didn't have enough money to put the fuel. So whenever I would come down a slide, I would switch over to the neutral. We have learned the virtues of going neutral when required. And just the world is emulating us. Second, sectoral applications are all these exhibits which you saw outside are not only limited to big scientific platitudes. We have actually successfully converted them into the instruments of sectoral development, instruments of bringing ease in the life of a citizen. Our space technology, for example, today has reached every Indian household, whether it is agriculture, whether it is soil health card, whether it is telemedicine, whether it is railway crossings, unmanned crossings, roads and buildings, smart cities. Swamitva program, ambitious program of Government of India, where you do the mapping of your land, mapping of your farm. You don't have to go around the revenue officers. The Patwari is out of job. That is, and the world is now trying to look up and follow what is Swamitva, what is DBT. That is the use of technology that we have mastered, not only confining it only to the sending up of rockets or talking philosophical attitudes. Since the time is limited and then I can go on and on for the whole day. But I think what is important is that under this government, we have succeeded in bringing ourselves out of silos. And Mr. Shukla would bear me out. This event today is one of those evidence. We have the defense personnel, and I'm actually trying to experiment with it in every sphere of life. Because I'm also dealing with the Lavasana IAS Academy. For the first time, we brought in army brigadiers there to have a course along with the IAS officers. In the days of joint command, you can't be functioning in isolation. So we have succeeded in mastering and cultivating the habit of giving up silos and working in an integrated approach. You would recall when the Aditya launch happened and I was to make the official announcement at Sri Harikota, the very sentence I used was, the mission has been executed by ISRO, but the success has been that of whole of science. Because the collaborators were there from IIT Madras, from IIT Bombay, from IIT Kharagpur, from Nata Institute of Fundamental Research, from National Aerospace Laboratory, CSIR, from National Aeronautics Limited. So we are now into a whole of science approach, and I'm sure we're going to have an extended approach when we also involve industry. So it has to be a synergy in brief between academia, startups, research, industry. And industry has to be an equal partner right from the beginning. If we have successfully launched this aroma mission from this region, from Bhadrawa, which is now being talked over all over the world, the purple revolution, we succeeded because we made industry a partner right from the beginning. And the boys and girls who are there now are rolling in millions. Our COVID vaccine is another example where a country like India, where you don't even have the health concept of getting therapeutic treatment. If you fall sick, you wait for some days. If you get worsened, pass off, you say, Pichle Janam ka karam. If you get well, you say, Maa ka Ashirwad. Both ways you are contented. That country was the one which
gave the concept of protective healthcare, preventive healthcare, and gave the first ever COVID vaccine. And therefore, this synergy, and as Shuklaji was saying, National Research Foundation is going to be another new opening where we are going to have a think tank which will decide what kind of research projects to undertake with relevance to our context, with relevance to our competition at the global level, because I'm convinced if you have to compete globally, you have to fulfill the global march, you have to live up to the global parameters, you have to have the global competitiveness. And coming straight to the defense technologies, I'll just take 2 minutes to share with this audience so that you know what we are doing. And sometimes you may also know that what has been exhibited outside has already been done by us. For example, broadly, we are into 5 sectors. The A, the cyber security. B, the quantum computing. 3, the artificial intelligence. 4, the unmanned aerial vehicles, including the drones. And just to give you a small briefing, because later on I can spend some longer time with you for those who are interested. We have initiated national mission on interdisciplinary cyber physical systems under the Department of Science and Technology. We have launched a national quantum mission for the defense for a swift, safe, secure communication and a new armatorium. In the IIT Madras, what we have displayed outside, secure mobile phone project is exclusively done, which is going to be the state of art. In IIT Madras itself, we have artificial intelligence analysis for investigating bomb attacks. To detect underground tunnels and electromagnetic radiations, the Indian Institute of Science, Education and Research, Pune, has undertaken an ambitious project. For submarines and underwater objects, the superconducting quantum interference devices, SQUIDs, again, the same institute, Pune is. I'm saying so that you could make use of all this, which is already happening, which you could just add value to in your projects or could get associated with them. We are also into the process of developing nano drones for the defense personnel. So nano drones to help armed forces for counter-terrorist operations is being carried forward in IIT Roorkee. I'm giving you the name of the projects along with the institutions so that each one of us could benefit. We have a naval combat management system project in IIT Mandi, which is a new IIT. And gone are the days when we would allow our human lives to be altered just during the counter operation. So we have on the lines of several other nations like Israel launched robots for weapon displaying and robotic actuators in Indian Institute of Sciences, Bengaluru, and a large unmanned underwater vehicle project in IIT Bombay. I don't have time enough, otherwise, because I'm passionately involved in this, I'll go on for day and the whole day. But ultimately, what I will say is, my objective of presenting this overview of this cutting-edge technology was that you are the stakeholders. You are going to be the users of these technologies. So you should at least know what is happening. The problem with us is that when we don't know that we don't know, or when we know that we don't know, we can go and ask that we don't know. But when we don't know that we don't know, then what to do? So I'm sure I'm not talking to some of us who don't know that they don't know. So that's why I'm trying to share this so that you could make use of us, we could collaborate. And I'm also sharing this information with the defense personnel for whom these projects are being actually carried forward. And I'm glad also to say this to an audience of IIT scholars over here, because we have a wide range of support to offer to these youngsters, both in terms of knowledge funding as well as financial funding, because you are the asset for us. More than 70% of population of India below the age of 40. And you are going to be those who are carrying this technology-driven growth in the next 25 years, as was being said by Professor God. So you would actually be the architects of Century India. And here we are to enable you to do your capacity building. Thank you very much. आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए आभार महोदय। वाकिफ है अब जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। जी हाँ, ladies and gentlemen, we now come to the keenly awaited part of this plenary session, that is the SIDM Champion Awards 2023. A word about these awards. They were instituted by
SIDM in the year 2020 to acknowledge and appreciate the distinguished performance of industries in the field of technology and innovation. The third edition of these awards, ladies and gentlemen, has witnessed an overwhelming participation of more than 100 companies. An eminent jury under the chairmanship of Dr. A.S. Pillai, a highly decorated scientist, as we all know, former CMD of BrahMos Aerospace, have winners in 4 categories and 3 subcategories. May I request the Honorable Raksha Mantri ji to felicitate the winners of SIDM Champion Awards 2023. रक्षा मंत्री महोदय से आग्रह, कृपया इन विजेताओं को सम्मानित करें. Category 1, Product and Technology Innovation to address defense capability gaps. Ladies and gentlemen, the award in the large subcategory goes to Tata Advanced Systems Limited. Please join your hands together. ALS-50 Precision Strike System, Tata Advanced Systems Limited. The winner for medium subcategory, Idea Forge Technologies Limited, for their Switch UAV. A big round of applause. Fixed wing VTOL UAV designed for a wide range of security and surveillance applications. Idea Forge Technologies. And the winner for SME Startup subcategory is none other than Exicom. And they get this award for innovating video downlink with recorder facility, electronic situational awareness system for advanced integration of manned and unmanned with 3C. The jury has also recommended 2 more special awards in this category. The first special jury award for medium subcategory goes to New Space Research. And they get this award for high altitude pseudo satellite, solar powered, long endurance stratospheric asset for intelligence, surveillance, and reconnaissance mission. Give them a big round of applause, ladies and gentlemen. And for small startup subcategory, the special jury award goes to 42 Technologies. And they get this award for COM42, a secure communication technology with an ultra-secure data vault USB device solutions. A big round of applause for COM42. Moving on to category 2, ladies and gentlemen, which is for development of import substitutes and indigenization to support legacy systems and platforms of the defense forces. For subcategory large scale, the winner is Tata Advanced Systems Limited. And they get this award for high mobility vehicle 12x12 that has been introduced in the Indian Army. And for medium scale, the winner is Kuril Technologies Private Limited, and they get for dual redundant Ethernet interface card. Kuril Technologies are our next awardees for medium scale. A big round of applause for Kuril Technologies as well. Next we have for subcategory small startup. The winner for this category of small startup is Sunlux Technovation. Sunlux Technovation Private Limited, and they get indigenous development of modules of boiler control system for Indian naval ship Vikramaditya. Please join our hands together.
Ladies and gentlemen, the jury has recommended a special jury award to L&T Defense for their indigenization of maneuverable Quest L&T Defense. This is also called Teer, ladies and gentlemen. A special award by the jury to L&T Defense. Moving on to the next category for recognition of companies who have made investments to create capabilities for design, manufacturing, or testing in niche technologies areas. And the award goes to SFO Technologies Private Limited. SFO Private Limited. Moving on to category 4 for distinguished export performance. This, ladies and gentlemen, has been the most fiercely contested, as we all have expected, given the high growth in export witnessed during the last 3 years. The winners of this category, for subcategory large, Bharat Forge Limited. A big round of applause for Bharat Forge Limited for the export of 155mm mounted artillery gun systems and 155mm ready-to-fill artillery shells. Bharat Forge Limited, the proud recipient. Next we have, for medium scale, Wave Mechanics Private Limited. Can I request Wave Mechanics Private Limited? And they get this award for mechanical kits for airborne systems such as radars, electro-optics, and UAVs precision manufacturing services. Moving on to the next, we have a subcategory small-scale startups. And this award goes to SA in Tech Manufacturing Private Limited. And they get this award for export of several products on precision manufacturing. SA Innotech Private Limited. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Mananiya Raksha Mantri ji ka hriday se aabhar. May I request this august gathering to also give a bigger round of applause to all the participants of SIDM Champion Award 2023. कई ऐसी शख्सियत जिन्होंने पसीना और अपनी शिद्दत से आत्मनिर्भरता के इस महायज्ञ में भाग लिया, लेकिन आज विजेताओं में उनका नाम शामिल नहीं है. May I now request Honorable Raksha Mantri ji to release the compendium of entries of SIDM Champion Award 2023. May I also request all dignitaries on the dais to kindly join the Honorable Raksha Mantri ji for this honor. The book, ladies and gentlemen, gives brief details of all participants, products, and facilities wielded by them for various categories of awards. It showcases our industry's prowess, several areas of military technologies, and also the products. माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा कंपेंडियम का अनावरण, जिसमें वो सभी जानकारियां शामिल हैं, जिसमें सभी इंडस्ट्री पार्टनर्स ने भाग लिया, इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने. Put your hands together. आइए तालियों की गड़गड़ाहट से इन लम्हों को और यादगार बनाएं. धन्यवाद मान्यवर. अब समय है उस उद्बोधन का जिसका आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है. मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आज के प्लेनरी सेशन को संबोधित करें. अपने प्रेरक उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें माननीय रक्षा मंत्री महोदय. SIDM चेयरमैन श्री SP शुक्ला जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर
Lieutenant General Upendra Dwivedi, GOCC, Northern Command, Lieutenant General Aniruddha Sen Gupta, COS Headquarters, Northern Command, Sri Jayant Patil, Immediate Past President, Dr. Samir Kamath, Chairman DIDO, Sri Sunil Mishra, DG SIDM, Professor Manoj Singh Gaur, Director IIT Jammu, Dr. Sarath Kumar Saraf, respected Padma Bhushan Pillai जी, और यहाँ पर सारे जो मौजूद सीनियर ऑफिशियल्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, स्टार्टअप से जुड़े हमारे जितने इंटरप्रेन्योर्स हैं, मीडिया के साथी और अब अन्य सभी देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं तुरंत यहाँ पर एंटर किया था तो मैंने यहाँ के जो एग्जीबिशंस लगे थे उसको मैं देखा। देखने के बाद जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बना है उसके बारे में मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं कह सकता हूं कि हमारे देश का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वह इमेजिनेटिव भी है, इनोवेटिव भी है और डायनेमिक भी है और प्रोग्रेसिव भी है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं इस एग्जीबिशन को देखने के बाद। साथियों, आज इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड, IIT जम्मू और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के कोलैबोरेटिव एफर्ट से आयोजित इस नॉर्थ टेक सिंपोजियम में आप लोगों के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी है। SIDM के प्रेसिडेंट श्री SP शुक्ल जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में अपने विचार रखने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। और यहाँ पर जिन चैंपियंस को, SID चैंपियंस को अवार्ड्स मिले हैं, उनको भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। और मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि शायद जो कंपटीशन था उसमें कामयाबी सबको मिली थी, लेकिन अवार्ड केवल 10 लोगों को दिया जा रहा है। इसलिए मैं सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं आप लोगों के सामने कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, क्योंकि SIDM को मैं कई बार संबोधित कर चुका हूं। मैं समझता हूं 6 वर्ष का समय हो गया है आप लोगों का, और 6 वर्ष में तो 4 बार, 5 बार या 6 बार नहीं, 6 बार तो नहीं, 4 बार, 4 बार मैं आ चुका हूं। इसलिए बहुत भूमिका बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि आपका एक शुभचिंतक होने के नाते आपकी बेहतरी के लिए, आपकी मजबूती के लिए 2-4 सीधी बातें आप सबके सामने में रखूं। साथियों, जब से SIDM की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक, जैसा मैंने कहा कि अनेक बार मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। जैसा मैंने कहा कि SIDM की स्थापना हुए लगभग 6 वर्षों का समय गुजर गया, लेकिन यदि मैं पिछले 4-5 वर्षों की बात करूं तो अनेक ऐसे अवसर आए हैं जहां मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है, तथा हमने आपकी समस्याएं सुनी हैं, और जहां तक बन सका है, जितना मैं कर सकता था, उन समस्याओं का समाधान भी निकालने की हमने भरपूर कोशिश की है। अब कामयाबी हमें किस हद तक मिली है इसका मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता। इसका सही मूल्यांकन यदि कोई कर सकता है तो हमारे SIDM के मेंबर्स ही कर सकते हैं। हमने न सिर्फ आपके लिए डिमांड एश्योरेंसी सुनिश्चित किया है, बल्कि हमने DRDO की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की पॉलिसी के अनुसार भी आपको लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। ये मेरी बात सही हो तो ताली बजाइएगा ताकि मुझे लग जाए, क्योंकि SIDM के मेंबर से मैं कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा हो कि कुछ ज्यादा कुछ मैं बोल रहा हूं। आप नहीं बजाएंगे तो मैं समझता हूं अक्लेमंद इशारा काफी, मैं समझ लूंगा कि इस क्षेत्र में जो मुझे करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था उतना मैं नहीं कर पाया। तो जैसा मैंने कहा कि हमने आपके लिए केवल डिमांड एश्योरेंसी सुनिश्चित नहीं किया है, बल्कि हमने DRDO की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की पॉलिसी के अनुसार भी आपको लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा जब भी आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसी समस्या का सामना करना पड़ा है, तब भी हमने उसके समाधान के लिए जो भी हो सकता था वह उचित कदम हमने हर बार उठाए हैं। इसी सिनर्जी और प्रयासों का ही परिणाम मैं मानता हूं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारे डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1 लाख करोड़
रुपए से और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 60,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर गया है। और जल्दी शायद मैं कुछ ही महीनों के बाद यह कहने की स्थिति में हो जाऊं कि हमारा एक्सपोर्ट अब 20,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। मैं इस मंच से फिर से आपको यह आश्वासन देता हूं कि आगे भी यदि SIDM को जहां कहीं भी जिस भी प्रकार की कोई जरूरत होती है, रक्षा मंत्रालय पूरी कमिटमेंट के साथ आप लोगों के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और साथियों, जब भी मुझे एक बार फिर से आपके बीच आने का अवसर मिला है तो मैं इस अवसर पर आपसे यह बात करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग उस पर विचार करें और जितना कर सकते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें यदि हमारे सुझाव सही हों तो। साथियों, आपने देखा होगा कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद उसके शुरुआती जो कुछ साल होते हैं उसके माता पिता, उसके रिलेटिव्स और आसपास के लोग उस बच्चे का पूरा ख्याल रखते हैं। उसके घर वाले इस बात का ख्याल रखते हैं कि वह क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, कब सोकर उठेगा, कब सोएगा। इन सब सारी चीजों का सारे परिवार के सदस्य ख्याल रखते हैं उस बच्चे का। उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कहाँ जाना चाहिए या कहाँ जाना अवॉइड करना चाहिए, ऐसी अनेक छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका ध्यान जो घर वाले होते हैं, जो एल्डर मेंबर्स होते हैं, वह करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा किशोरावस्था को मानी यंग होता जाता है की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे ही उसके अंदर स्वयं एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप करने लगती है और डेवलप होनी भी चाहिए। उसे भी अपने कर्तव्यों का एहसास होना चाहिए। यदि उसे अपने कर्तव्यों का बोध हुआ तो यह उसके लिए तो फायदेमंद होता ही है, साथ ही साथ यह उसके परिवार, रिश्तेदारों और आसपास के सामाजिक परिवेश के लिए भी यह लाभदायक होता है। ठीक इसी प्रकार SIDM को भी अगर आप देखें तो इसकी स्थापना के लगभग 6 वर्ष पूरे हो गए और सरकार या कहे मंत्रालय एक सच्चे साथी की तरह हमेशा साथ खड़ा रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे SIDM, अब आ रहा हूं बात कुछ हो सकती है कड़वी हो, लेकिन अब जैसे जैसे SIDM परिपक्व हो रहा है, मन मैच्योर्ड हो रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूं उसकी भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसके भी SIDM निभाएगा तो वह आपके लिए तो फायदेमंद होगा ही, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्र, भारतीय सशस्त्र बलों और भारतीय औद्योगिक इकाइयों के लिए भी वह उतना ही लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब इस दिशा में SIDM कैसे प्रयास कर सकता है तथा वह कैसे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर निभा सकता है, इस संबंध में आज मैं आपको कुछ सुझाव देने की कोशिश करूंगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक ऐसे विषय पर जिस पर मैं अलग अलग मंचों पर काफी लंबे समय से लगातार बातचीत करता रहा हूं। हालांकि उस दिशा में काम भी हुए हैं, लेकिन अभी भी उसमें बहुत कुछ करना शेष है और वह विषय है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने हमेशा से इस बात पर बल दिया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे लिए तेज गति से भागती हुई दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी देश के विकास के लिए उसके आधारभूत तत्वों में से एक होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, यह भी सच है। हालांकि यह एक रिस्की वेंचर है, रिस्की वेंचर होता ही है क्योंकि इसमें नए तरीके से सोचना पड़ता है और हो सकता है कई बार आपको वह परिणाम न मिले जिसको लक्ष्य बनाकर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम प्रारंभ किया था। लेकिन इसके बावजूद हमें इसकी ओर ध्यान देना ही है और देना पड़ेगा। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में हम एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं। यदि हमें कोई टेक्नोलॉजी
कोई इमिटेशन या फिर ट्रांसफर के थ्रू मिलती है तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। यदि कोई ट्रांसफर करता है टेक्नोलॉजी, इमिटेशन, इसमें भी कोई गलत नहीं है। लेकिन हम इन आधारों पर एक डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना किसी भी सूरत में नहीं देख सकते। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमें अपने खुद के पेटेंट फाइल करने पड़ेंगे। उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि उस खर्चे से प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर बने, प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव बने। ऐसा अवश्य हो सकता है कि उस खर्चे से हमारा आज का प्रॉफिट कम हो जाए, यह भी हो सकता है। लेकिन दूरगामी दृष्टिकोण से वह आपके उद्योग के लिए और हमारे देश के लिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, वह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश आज के लाभ को भले ही कम करता हो, लेकिन वह भविष्य के लाभ को बढ़ाएगा। आज की प्रॉफिट भले ही कम करता हो, लेकिन फ्यूचर की प्रॉफिट वो बढ़ाएगा। साथियों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए सिर्फ पूंजी का निवेश ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें इसके लिए एक कल्चर भी डेवलप करना पड़ता है। और वह कल्चर डेवलप होता है एक स्किल्ड और बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स से। हमारे देश में ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ एक से एक बढ़कर IIT, IIM, IISP जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये सारे इंस्टीट्यूशंस अपने अपने स्तर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन हमें उनके कार्यों को डिफेंस सेक्टर से भी जोड़ने की आवश्यकता है, और ऐसा करके हम अपने डिफेंस सेक्टर में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर R&D कल्चर डेवलप कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, इस कल्चर को डेवलप करने में हमें अपने देश के ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ साथ यदि विदेश से भी कुछ हासिल हो, फिर से बात अपनी मैं दोहराना चाहूंगा, इस कल्चर को डेवलप करने में हमें अपने देश के ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ साथ यदि विदेश से भी कुछ हासिल हो तो भी हमें इसमें बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए। विदेश में टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कंपनी, स्पेस एजेंसी व साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे अनेक ब्रिलियंट इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जिनका भारत के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट है। हमें यह प्रयास करना होगा कि हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें उनका सहयोग मिले। यदि वो इंडियन ओरिजिन के नहीं भी है, मैं यहां कहना चाहूंगा कि वह इंडियन ओरिजिन के नहीं भी है, यदि वो अन्य देशों के भी हों, और यदि वो भारत की ग्रोथ हिस्ट्री का यदि वो हिस्सा बनना चाहते हो, तो हमें उन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को अपने R&D सेक्टर से जोड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हमें सिर्फ साइंटिस्ट व इंजीनियर ही नहीं, बल्कि मैनेजर, लीगल एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी बेहतरीन रखने होंगे, चाहे वो हमें अपने देश से मिले या फिर विदेश से मिले। लेकिन साथियों, ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम उनको एक अच्छा अमाउंट देंगे, वेतन देंगे, तथा साथ ही साथ उनको एक अच्छा वर्क कल्चर भी प्रोवाइड करेंगे, तभी संभव है। हमारे यहाँ 19वीं सेंचुरी में जो HR पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के आधार पर हम आज 21वीं सदी में अपने वर्क फोर्स को नहीं चला सकते हैं। इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। अब काम करने के घंटे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं यह है कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं। कितने घंटे काम करते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं। पहले क्या होता था, आप जितने घंटे काम करें उस हिसाब से आपको वेतन दिया जाता था, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। अब इंटेलेक्ट और इनोवेशन के बेस पर वेतन देने पर ध्यान दिया जाता है, चाहे हमारा देश हो अथवा विदेश हो। अब स्थिति यह बन गई है कि यदि आप नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं
R&D का कार्य कर रहे हैं तो काम करने के घंटे से आपका आकलन नहीं किया जाएगा, आपका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि आपने कितने घंटे काम किया है। पुराने पैमाने के आधार पर आपके काम को मापा नहीं जा सकता है, इसलिए हमें नए एचआर स्टैंडर्ड्स को भी अपनाना होगा और हमें ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फ्लैट एंड एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा। एक ऐसा वर्क कल्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा जहां सीनियर और जूनियर का कंसेप्ट हो। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमें ऐसा वर्क कल्चर डेवलप करना पड़ेगा जहां और सीनियर और जूनियर का कंसेप्ट हो, सुपीरियर और इंफीरियर का नहीं, क्योंकि जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट होते हैं वो इतनी ज्यादा हायरार्की में काम नहीं कर सकते। साथियों, हमें एम्प्लॉइज के वीकेंड्स और हॉलीडेज को रेस्पेक्ट करने की आदत डालनी होगी। फिर से दोहराना चाहूंगा, हमें एम्प्लॉइज के वीकेंड्स और हॉलीडेज को रेस्पेक्ट करने की आदत डालनी होगी। साथ ही साथ हमें महिलाओं को भी अधिक इफेक्टिवनेस के साथ R&D से जोड़ना होगा। इसके लिए हमें मैटरनिटी लीव पॉलिसी और क्रेची सिस्टम और वर्क प्लेस पर उनके अधिकारों की दिशा में भी काम करना पड़ेगा। साथियों, इसके साथ ही यदि हमें बेस्ट टैलेंट्स को अपनी ओर खींचना है, अट्रैक्ट करना है यदि हमें, तो हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी तैयार करना पड़ेगा। 20th सेंचुरी की तरह नौकरी से निकाल देने अथवा सैलरी कार्ड लेने की मोटिवेशन अथवा नेगेटिव अप्रोच अब 21वीं सदी में काम करने वाले नहीं है। पॉजिटिव मोटिवेशन के माध्यम से ही हम बेस्ट टैलेंट्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और कोई दूसरा चारा नहीं है। साथियों, हम यह भी सुनिश्चित हमें करना होगा कि जो हमारी भारतीय औद्योगिक इकाइयां हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनमें ओनरशिप और मैनेजमेंट में आवश्यकता अनुसार एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन देखने को मिले। फिर से बात दोहराना चाहता हूं, हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारी जो इंडियन ये हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनमें ओनरशिप और मैनेजमेंट में आवश्यकता अनुसार एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन देखने को हमें मिले। हम अपने आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां कोई एक व्यक्ति किसी कंपनी की नींव रखता है तो हो सकता है कि वह एक अच्छे फाउंडर के साथ साथ वह एक अच्छा मैनेजर भी हो, लेकिन जब वह फाउंडर बूढ़ा हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो यह आवश्यक नहीं है उसका बेटा या बेटी ही उसकी ही काबिलियत के बराबर का मैनेजर हो। कंपनीज के मामले में डायनेस्टिक ओनरशिप को सही ठहराया जा सकता है। कंपनीज के मामले में डायनेस्टिक ओनरशिप को सही ठहराया जा सकता है, लेकिन डायनेस्टिक लेवल पर कंपनी का मैनेजमेंट करना कई बार कंपनी के लिए और उसके एम्प्लॉइज के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। यह आपने भी अनुभव किया होगा। हमने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं जहां बड़ी बड़ी कंपनियों की ओनरशिप तो डायनेस्टिक चलती रह रही है, लेकिन उनके मैनेजमेंट को वे कंपनीज का एक कॉम्पिटेंट बोर्ड के थ्रू प्रोफेशनली रन करती है। वैसे तो इस मंच से मैं राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यदि आप पिछले कुछ दशकों से, केवल मैं समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आपने पिछले कुछ डिकेड्स यदि देखा होगा और राजनीतिक परिदृश्य का आकलन यदि आप करें तो आप निश्चित रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो डायनेस्टिक कंट्रोल पर चल रही हैं। मैं बता रहा हूं होता क्या है डायनेस्टिक कंट्रोल बनाए रखने का, यदि जिद है हमारी तो परिणाम क्या होता है। वैसी पॉलिटिकल पार्टी डायनेस्टिक कंट्रोल पर चल रही है और मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि डायनेस्टिक कंट्रोल पर कोई कंपनी या राजनीतिक दल का मैनेजमेंट चले तो अंत में उसकी दुर्गति होनी तय है, उसका समाप्त होना तय है। इसलिए धीरे धीरे हमें प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट की ओर मूव करना होगा। और साथियों, मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूंगा। यह SIDM का जो कार्य है, इसमें कई बार एक्सपोर्ट के लिए हमें क्वालिटी एश्योरेंस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बायर तो हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट ही खरीदना चाहेगा और हमने SIDM के सामने आने वाली
क्वालिटी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका हमेशा समाधान किया है। लेकिन साथियों, हमें यहां इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बायर या सरकार तो अपनी तरफ से क्वालिटी चेक की कोशिश करेगी ही, बायर या सरकार तो अपनी तरफ से क्वालिटी चेक की कोशिश करेगी ही, लेकिन उसके अतिरिक्त आप स्वयं अपने अंदर एक इंटरनल इवैल्यूएशन की व्यवस्था बना सकते हैं, और मैं समझता हूं कुछ लोगों ने निश्चित रूप से बनाया होगा। मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि आप इंडस्ट्री के कुछ साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को मिलाकर एक ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी बनाइए जो स्वतंत्र हो और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य करे और इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए इवैल्यूएट करे। वैसी कि इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। जैसे यदि कोई इक्विपमेंट बहुत अच्छा है तो उसे ए रेटिंग देना, कुछ उससे कम अच्छा है तो बी रेटिंग देना, यदि बिल्कुल ही खराब है तो उसे डिसमिस करना। यदि आप इस क्वालिटी चेक की व्यवस्था को अच्छे से ऑनेस्टली रन करेंगे तो इससे समय के साथ दुनिया में आपकी साख बढ़ेगी, दुनिया में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, बायर्स का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ट्रस्ट भी बढ़ेगा। यदि आप ऐसा कर पाए तो दुनिया भर में आपकी रेटिंग को महत्व दिया जाएगा। साथियों, इसके अतिरिक्त मैं एक अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो मैं जिसे महत्वपूर्ण मानता हूं, आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आजादी के समय से ही डिफेंस प्रोक्योरमेंट में करप्शन एंड फेवरेटिज्म की शिकायत आती रही है। हालांकि इस प्रकार की शिकायतें और भी दूसरे सेक्टर्स में भी देखने को मिलती हैं, लेकिन उनके लिए हमने सीबीआई, ईडी, विजिलेंस जैसी अनेक व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हालांकि मुझे पता है कि आप सभी ईमानदार, नैतिक और बेहद उच्च मानकों वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि प्रत्येक सेक्टर में कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो तालाब में गंदी मछली के जैसे होते हैं। और आप, एक कटु बात है, और आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे लोगों के करप्शन एंड मेल प्रैक्टिसेस के कारण जनता का संस्थानों पर से विश्वास उठने लगता है, जिसे एक लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत अच्छा होगा कि एसआईडीएम एक इंटरनल विजिलेंस मैकेनिज्म, हमारा आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, करना बहुत कठिन है, मैं जानता हूं। इसलिए अच्छा होगा कि एसआईडीएम एक इंटरनल विजिलेंस मैकेनिज्म का भी निर्माण करे और आप खुद अपने लेवल पर ही कुछ कदम उठाएं, या देखें कि यदि कोई आपसे एफिलिएटेड कंपनी गलत कर रही है तो फिर गलत इंफॉर्मेशन पास कर रही है, तो आप गवर्नमेंट में जाने के पहले एक बार उसको भी हिदायत दें, उसको समझाएं, और फिर भी यदि नहीं सुधरता तो फिर गवर्नमेंट के पास जाएं, गवर्नमेंट के सामने इसे लाएं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि किसी की गलती के बारे में एहसास यदि करा दिया जाए तो इससे अच्छी बात क्या होती है यदि अपने अंदर वो सुधार कर ले, और नहीं होता है तो फिर उसके बाद तो गवर्नमेंट की नजर में उसे लाएं। इस प्रकार के कार्य न सिर्फ संस्थानों में बल्कि भारत के लोकतंत्र में भी जनता से। साथियों, मेरे कुछ सुझाव ऐसे थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। यदि आप इन सुझावों पर अमल करें तो हो सकता है कि आप एक ऐसी संस्था के रूप में उभर कर सामने आए जिसके इंटरनल विजिलेंस सिस्टम का अनुकरण आगे चलकर दूसरे फिक्की, सीआईआई जैसे बड़े जो संस्थान हैं भी कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इन सुझावों को कल से ही लागू कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप इन सुझावों को कल से ही लागू कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप सब आपस में बैठकर बात करें। हमारे दिमाग में जो बात आई है वो मैंने आपके सामने रख दिया, आप इस पर बात करें और विचार करें। और मैं समझता हूं कि बात करेंगे, विचार करेंगे तो एक आउटकम के साथ कुछ ना कुछ तो आप आएंगे ही, सामने आएंगे, और आप सभी इस पर विचार करें तो हो सकता है कुछ और भी अच्छी चीजें निकलकर आपके सामने आए। आप उनसे मुझे भी यदि अवगत करा सकेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपकी मदद ही करने वाला हूं। कभी मैंने कोई हर्डल कहीं पर कोई क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है, और इस तरह के विचार विमर्श से मैं समझता हूं एसआईडीएम अपने भीतर अधिक से अधिक गुड प्रैक्टिस ला सकेगा और अपनी कार्य पद्धति को और अधिक बेहतर बना सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए मैं इस कॉन्क्लेव की सफलता की कामना करते हुए अपनी बात को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायक उद्गारों के लिए हृदय से धन्यवाद माननीय। आपका संबोधन हम सबके लिए कर्तव्य पथ पर डटा है। सर, प्रोटोकॉल से थोड़ा सा हटकर आपकी अनुमति से मैं केवल 2 शब्द कहना चाहूंगा। इस 6 साल की SIDM को हमेशा आपका सपोर्ट मिला है। आपने हमेशा हमारा